Hello, in this lecture we are going to see elastic collision. In previous lecture we had seen what is elastic collision, inelastic collision and perfectly inelastic collision. So in elastic collision we know that kinetic energy is conserved. Kinetic energy जो है वो एक सेम रहती है before collision and after collision in elastic collision. So we can say delta K equal to 0 और हर कोलिजन की एक प्रॉपर्टी है दैट इज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. So these two things are conserved in elastic collision, and we also saw that coefficient of restitution that is represented by E, which is equal to v1 minus v2 upon u2 minus u1, that is minus of velocity of separation divided by velocity of approach. This is equal to 1, right? For elastic collision E is equal to 1. So we can say v1 minus v2 is equal to u2 minus u1 or v1 plus u1 equal to v2 plus u2. So this is the equation we have, and we also have delta K equal to 0. That means half of m1 u1 square plus half of m2 u2 square, that is initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. Now if you put this v1 equal to v2 plus u2 minus u1, then we can get equation in v1, only v1. If we substitute v2 equal to v1 plus u1 minus u2, so v2 equal to v1 plus u1 minus u2. If we substitute v2 equal to v1 plus u1 minus u2 in this one, then v2 is eliminated. We can get v1 in terms of u1 and u2. So after solving these two equations, we get v1 equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus 2m2 upon m1 plus m2 into u2. So we get v1 equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 multiplied by u1 plus 2m2 upon m1 plus m2 multiplied by u2. So this is the equation for final velocity of first object when it is elastic collision. Now we have defined m1 and u1 as we have assigned m1 and u1 m1 and m2 for that is randomly. we हमने जरूरी नहीं है कि यही m1 हो और ये m2 हो. This could be also m1 and this could be also m2. So basically v1 और v1 जो है वो किसी एक की फाइनल वेलोसिटी हो सकती है. So we have assigned m1 and m2 randomly. So subscript can be changed. So if we write v2, हमने m1 को m2 से रिप्लेस कर दिया, दैट इज हमने सबस्क्रिप्ट चेंज कर दिए. तो v2 क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 है तो v2 हो जाएगा m2 माइनस m1. नीचे सेम ही रहेगा m1 प्लस m2. यहाँ पे u1 है तो यहाँ पे हो जाएगा u2 प्लस यहाँ पे 2m2 है तो यहाँ हो जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2. u2 का हो जाएगा u1. So this is the equation for final velocity of second object after collision. So this is elastic collision. Now there are various cases for this one. अगर suppose u2 is that means second object is at rest.
we can consider second object as wall. So u2 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. So we get v1 equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 only. Also if m2 is much greater than m1, then we get v1 equal to u1. If we write m2 is greater than means if m2 is greater than m1, that means m1 is negligible to m2, then we can write m1 minus m2 as minus m2 only, and m1 plus m2 as only m2, because m1 is very much less than m2. So this will get minus m2 upon m2, so we get minus u1, and this 2 m2 upon m1 plus m2, m2 get cancelled, and u2 was at rest. So that is u2 is 0. So we get v1 equal to minus u1. What this means is, अगर हमने किसी बॉल को ऊपर से छोड़ा तो ग्राउंड का मास क्या है, m2 है. m2 is very much greater than m1. So this ball will rise back with equal velocity in the upward direction. So only direction will be changed when m2 is greater than m1 and u2 equal to 0. That means ग्राउंड रेस्ट पे है और ग्राउंड का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है m1 के कंपैरिजन में. So in this case, what is final velocity of first object? It will be negative of its initial velocity. That means वो बस डायरेक्शन चेंज करेगा, उसकी magnitude of velocity will be same. Now in second case, suppose m2 is greater than m1. That means कोई ट्रक है जो रेस्ट पे है और एक साइकिल आई और उसने ट्रक को ठोक दिया. So this will be again same case, m2 is greater than m1 and u2 is equal to 0. So we get v1 equal to minus u1. मतलब अगर किसी स्टेशनरी ट्रक को किसी साइकिल ने ठोका तो साइकिल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही रहेगी और रिवर्स डायरेक्शन में रहेगी. So this is how we can find velocity of cycle. Now in second case, अगर साइकिल रेस्ट पे है और ट्रक जो है वो चल रहा है, तो ट्रक ने अगर साइकिल को ठोका तो क्या होगा वो हम देखेंगे. तो इन दिस केस m2 is again greater than m1. साइकिल रेस्ट पे है, that means u1 equal to 0. Now what will be, we have to find velocity of cycle. So v1 equal to कितना हो जाएगा, v1 equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1. u1 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी. Now only this term will remain. So 2m2 upon m1 plus m2. Now m2 is greater than m1. So m1 plus m2 को हम लिख सकते हैं m2 और m2 कैंसिल हो जाएगा. So only 2 will remain. So 2 into u2. That is, अगर ट्रक ने साइकिल को ठोका तो साइकिल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल द वेलोसिटी ऑफ ट्रक. और ट्रक की वेलोसिटी क्या रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर साइकिल का मास नेग्लिजिबल है, ट्रक की वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी. वो हम इस इक्वेशन से फाइंड भी कर सकते हैं, u1 equal to 0. सो ये टर्म तो आएगी ही नहीं. नाउ v2 equal to m2 minus m1 upon m1 plus m2 into u2. So m2 minus m1 can be written as m2 because m2 is greater than m1, and m1 plus m2 can be also written as m2. m2 will get cancelled, only u2 will remain. That means v2 equal to u2. That is, ट्रक की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी भी रहेगी. सो v2 equal to u2. So और अगर दोनों सेम मास रहे तो क्या हो जाएगा, मान लो दो मार्बल्स है और हमने एक मार्बल स्टेशनरी है और हमने उसको दूसरे मार्बल से कोलाइड किया. सो व्हाट विल हैपन, m1 और m2 सेम है. सो यहाँ लिख देता हूँ,
m1 equal to m2 and u2 equal to 0, दैट मीन्स सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो 0 पे है और दोनों का मास सेम है, तो उस केस में हो जाएगा what will be v1 m1 minus m2 equal to 0 हो जाएगा. So this is 0 and u2 is 0 because second object is at rest. So जो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी वो हो जाएगी 0. नाउ फॉर सेकेंड वन m2 minus m1 will be 0 because दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है. in this one 2m1 upon m1 plus m2. now m1 plus m2 equal to 2m1 because दोनों का मास सेम है, so 2m1 will get cancelled and v2 equal to u1. so that means अगर दो ऑब्जेक्ट का मास सेम है और सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट से उसको कोलाइड किया, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी रहेगी वो सेकेंड ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो जाएगी और फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा. सो दैट मीन्स व्हेन टू masses are of same mass, then the momentum is transferred from the first ball to second ball, that is first mass to second ball. So there is no change in its kinetic energy nor change in linear momentum. Basically only momentum transfer takes place, total momentum transfer takes place when two masses are of same weight, that is two objects have same weight, same mass. So this is how we get v1 and v2. These are two most important formulas for collision when it is elastic collision. Thank you.